Yep. So let's begin. Let's not waste much time. Let's begin. Okay. Now listen to me very carefully. Okay. आज हम लोग यहाँ पर इसलिए लाइव गए हैं बिकॉज आई हैव टू अनाउंस दिस रिविजन बैच. खैर वो तो पता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द एंटायर बैच शेड्यूल, व्हाट इज दिस बैच ऑल अबाउट, नेक्स्ट हाउ विल वी कंडक्ट द लेक्चर्स, एंड मेन थिंग शेड्यूल क्या होने वाला है. सो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको क्विकली एक 10-15 मिनट्स में डिस्कस करवा दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे रिगार्डिंग दिस बैच. ओके चलो, सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड लेट अस क्विकली बिगिन. अब about this flyer over here, I have already discussed this in a separate video, but इस वीडियो में कुछ चेंजेस है, थोड़े से चेंजेस है, तो वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ. लाइक अटेम्प्ट वगैरह इज सेम. अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर ऑफ लेक्चर्स इज नाउ फिक्स्ड एट 10. ओके, सो वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन जस्ट अ स्कोप ऑफ 10 लेक्चर्स. सो ना आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा ना मुझे ज़्यादा लेक्चर्स लेने पड़ेंगे. वी विल फिक्स इट एट 10 लेक्चर्स. ओके, लैंग्वेज इज डेफिनेटली हिंदी प्लस इंग्लिश, लाइक वी से इंग्लिश. ये सारी चीज़ें तो है. इसके अलावा देर इज जस्ट वन मोर चेंज ओवर ईयर. इट्स रिगार्डिंग योर सपोर्ट. यहाँ पे जब मैंने लास्ट टाइम लेक्चर लिया था, जब मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो डाला था, इट वॉज एट 1.6K. नाउ इट इज़ एट 1.7K विद ऑल योर सपोर्ट. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी. नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लायर. आई विल शेयर दिस ऑन टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर करवा दूंगा ये फ्लायर को. सो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट थिंग, नाउ स्पीकिंग अबाउट द बेसिक टाइम टेबल. क्या होने वाला है इस बैच का टाइम टेबल. सो लेट मी टेल यू दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ वी आर बिगिनिंग दिस बैच. सबसे पहला हम लोग करने वाले हैं रिविजन ऑफ लेवरेज एनालिसिस चैप्टर ऑन 1st of August 2025. वी विल गो लाइव एट 7:30 PM. ये भी बता देता हूं मैं आपको, 7:30 PM daily we are going to go live. Daily means not daily. Whenever there is a lecture, 7:30 PM it will start and we are going to revise all the concepts. Okay. So let me tell you that first lecture is going to be on leverage analysis. We are going live at the rate 7:30 PM tomorrow. So जुड़ जाना, नखरे मत करना. Next, lecture number 2 is on 4th of August. Saturday, Sunday I have some prior commitments, so मैं live नहीं जा पाऊंगा. But from Monday हमारा अगला चैप्टर होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मंडे 4th of August 7:30 PM. दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड लेक्चर. व्हाट अबाउट माई थर्ड लेक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, August 5th 2025. Okay, 7:30 PM. So 4th of August there is a lecture, 5th of August there is a lecture. 4th of August cost of capital, 5th of August capital structure. Next, lecture 4 and lecture 5. Now on 6th there is no lecture. 7th August and 8th August 2025 हम करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो भाई साहब आप लोगों को पता नहीं क्यों इतना कठिन लगता है, बट ट्रस्ट मी, जस्ट गिव मी 2 लेक्चर्स. ये मेरी गारंटी है कि मैं ये चैप्टर आपको एकदम आसानी से रिवाइज करवा दूंगा. I am going to make you all revise this chapter very nicely, and that is called investment decisions, one of the most feared chapters of financial management, which we will revise in just 2 lectures, 7:30 PM, 7th and 8th August 2025. Next, lecture 6 and lecture 7. lecture 6 में होगा रेशियो एनालिसिस. ट्रस्ट मी, रेशियो एनालिसिस एक लेक्चर काफ़ी है आप लोगों के लिए, बिकॉज मैंने इस लाइक आई डू एवरी टाइम ऑल द इंपॉर्टेंट रेशियोज जो एग्जाम में हर बार आते हैं वही मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवाऊंगा. सो 11th August इज रेशियो एनालिसिस एंड 12th August वी आर स्टार्टिंग विद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सर वो लेक्चर नहीं सर, नो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट समझ में ही नहीं आता है एग्जाम में. अरे ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई दे के तो देखो तुम, यू विल फॉल इन लव विद दिस चैप्टर. एक लेक्चर में आई विल मेक यू फॉल इन लव विद दिस चैप्टर. एग्जाम में मार्क्स तो यू आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी ऑन 12th of August 7:30 PM. एंड फाइनली लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पार्ट 2 इज गोइंग टू बी ऑन August 14th and on August 16th the final chapter, that is dividend decision. So this is the entire schedule. And इसके बाद ना 10th वाला लेक्चर जो है वो भी एक होने वाला है जिसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, स्ट्रैटेजीज दूंगा, भर भर के मैं आपको
जो है गाइडेंस देने वाला हूँ फॉर FM, जिसमें आप इस पेपर में मेरे भाई 50 on 50 स्कोर कर सकते हो। आई एम नॉट जोकिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप इस बार 50 on 50 टारगेट जरूर करोगे, जरूर अचीव करोगे, दैट इज माय गारंटी। और ये सेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। सो लेक्चर 10 यहाँ पे आपको शेड्यूल में दिख नहीं रहा है, बट जैसे ही 16 अगस्त को फिनिश होगा, अगले ही दिन 17 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको गाइडेंस वाला सेशन दे दूंगा। सो उसकी टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के अलावा डेट्स थोड़े से कंसिस्टेंट नहीं है, आई अंडरस्टैंड। सो ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आई विल अटैच इट इन द डिस्क्रिप्शन एज सून एज दिस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीम इज ओवर। सो आपको तुरंत जुड़ जाना है, एंड ये PDF भी मैं आपको वहाँ पे शेयर करवा दूंगा। Okay, now this was all about the batch details, this was all about the batch timetable, and now finally about the basic flow. अब इसमें क्या है ना, I expect some things from you all जो आपको इस बैच में कंसिस्टेंट रहने के लिए एंड इस बैच का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट आर दोज थिंग्स? सबसे पहले, हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट? हर लेक्चर शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक ही चीज़ पूछूंगा, क्या आपने पिछले लेक्चर में सेल्फ प्रैक्टिस किया? आप देखोगे ना, इफ यू हैव अ लुक एट द टाइम टेबल, डेट्स आर अ बिट इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट के बाद डायरेक्टली देयर इज अ लेक्चर ऑन 4th, देन 5th इज देयर इज अ लेक्चर, देन 6th देयर इज नो लेक्चर, 7th एंड 8th। तो जो भी खाली दिन बीच में आ रहे हैं ना, आई एक्सपेक्ट यू ऑल कि आप जो भी प्रीवियस लेक्चर में करवाया है, यू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिर कोई सेंस नहीं बनता अगर आप सिर्फ देख रहे हो। You are just watching the lectures, you are not practicing in the lectures, you are not practicing outside lectures. It actually makes no sense. Okay, so please have a self practice, and I will actually ask you all see, these lectures are live, so I'll ask you all whether you have self practiced or not. Nahi kiya hai, it's your loss. Next, also this time I have adapted to a new approach. Every chapter, every concept, I will make you all revise with some practical financial news. Like for example, I want to explain you the concept of operating fixed cost. I will bring you a financial news. Like this particular company has rented this premises and this much is the operating fixed cost. ये सारे प्रैक्टिकल फाइनेंस न्यूज से जब आप कंसेप्ट समझोगे ना, बॉस एग्जाम तो क्या, एग्जाम के बाद भी नहीं भूलोगे। दैट इज द गारंटी फ्रॉम माई साइड विच यू कैन टेक इट इन राइटिंग। ओके, सो मेरे भाई, प्रैक्टिकल फाइनेंस न्यूज, ऑफकोर्स एकेडमिकली when it comes from exam perspective, हम भर भर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले, बट इसके अलावा प्रैक्टिकल एज जो बहुत ज़रूरी है वो भी मैं आपको दे दूंगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, आई वांट यू ऑल टू प्लीज कीप द चैट बॉक्स एक्टिव। अभी मेरे को सिर्फ एक ही कमेंट दिख रहा है, कीप द चैट बॉक्स अ बिट एक्टिव ड्यूरिंग द लेक्चर, क्योंकि आप आंसर करोगे आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप रॉन्ग आंसर करोगे तो आपको कुछ नई चीज सीखने मिलेगी। यू विल हैव अ लुक एट वॉट वेयर यू नीड टू इम्प्रूव, वेयर यू आर द बेस्ट एट। तो यार इंटरेक्टिव नहीं होगा ना, मजा नहीं आएगा, सच्ची बोल रहा हूँ। सो प्लीज कीप द चैट बॉक्स अ बिट एक्टिव ड्यूरिंग द लेक्चर्स। एंड दिस इज द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट ट्रीट दिस रिविजन बैच एज अ रिविजन बैच, ट्रीट दिस रिविजन बैच एज एन ओपन चैलेंज। मैं आपको बताता हूँ क्या है। In the very first lecture, see what is going to happen. I will show you a magic which will actually work. In first lecture na, I will get 100% students. In the second lecture, they will decrease to 80. In the third lecture, 60. ऐसा करते करते when it comes to last lecture ना, only 20 to 25% students will be left. And you know, ICI को इतने ही चाहिए पास होने के लिए. Institute does not even need 100 students. Institute needs only 20 to 25% students. And who will be those students? The ones who will survive till the last lecture. अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम सर्वाइव करोगे कि नहीं। एंड इफ यू हैव द गट्स ना, प्रूव मी रॉन्ग। दिस इज एन ओपन चैलेंज फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल कि बॉस यू विल लीव दिस बैच इन बिटवीन। ओपन चैलेंज है मेरा, बट अगर तुम्हें पास होना है तो ये चैलेंज लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रूव मी रॉन्ग एंड यू हैव टू सर्वाइव टिल द लास्ट लेक्चर। ऐसा नहीं है कि द लेक्चर्स आर गोइंग टू बी वे नॉट, द लेक्चर्स विल बी बोरिंग, द लेक्चर्स विल बी हार्ड, बट कंसिस्टेंसी इज वेयर मोस्ट ऑफ अस फेल, एंड कंसिस्टेंसी इज द फैक्टर विच प्लेज द मैक्सिमम रोल इन CA एग्जाम्स. So don't consider this as a batch. It's an open challenge. If you can win this challenge, you can win in the exams as well. ये मेरी गारंटी है बॉस। जीत के दिखाओगे एग्जाम में अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और जीत गए तो, ठीक है। सो आज ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे। इसी के अलावा I'll share this particular basic details. I'll share the schedule in my telegram group. ये basic flow भी अगर आप चाहो तो मैं ये भी share करवा दूंगा telegram group में। But before we end up, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बतानी है। जस्ट वेट अ मिनट। Yes. Now a lot of people have a question that
कौन से मटेरियल से रिवाइज होगा, विल इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल, विल इट बी फ्रॉम सम क्वेश्चन बैंक, किससे रिविजन होने वाला है. ओके, सी इट इज वेरी वेरी सिंपल. द क्वेश्चंस विच आई एम गोइंग टू कवर विल बी फ्रॉम ICI मॉड्यूल, RTP, PYQ, whatever good questions are there and whatever questions I feel which institute can target in the exam, मैं वो सब कुछ cover करवाऊंगा. Okay, so we are going to cover module, RTP and PYQ. Now when it comes to conceptual revision, where the conceptual revision is going to be there, let me tell you. So recently I had launched a book on CA Inter Financial Management. It's called FM Revision Rajdhani, which concises the entire subject, all the concepts in just 50 pages. आप देख सकते हो सारे chapters इसमें covered है boss. Every chapter with concepts, with the important questions, I have covered it. So we are going to revise all the concepts. See, I have written each and everything over here. This is the leverage analysis which we will be using in tomorrow's lecture. सब कुछ, all the important points है. देखो ये सारे important points है जहाँ पे leverage में बच्चे गलती करते हैं exam में. All the concepts, all the points, all the questions which I feel I have concised it, and this is chapter wise. Okay, so now this material, let me tell you, it is available for 150 rupees, and apart from this textbook, you will also get 2 more books. I have prepared a 74 pages question booklet which will help you gain very good marks in FM, because that question booklet has self-drafted questions which you will not find anywhere, but which will help you tremendously in your conceptual clarity. इसी के अलावा those who have problems in theory, chapter 1, chapter 2, I have concised it totally in flashcard format. I'll just show you that. Wait. See, this is the self-practice question booklet. Let it load. See, I have case studies over here, case study based MCQs. I have descriptive questions over here. See, this is the case study MCQs. I have descriptive questions. I have independent MCQs as well. See this, these are some independent MCQs which I have designed for you all. Apart from that, big descriptive questions are also there. सब कुछ है मेरे भाई, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दोज हु हैव टेंशन इन थियरी, मतलब कोई एक चैप्टर एकदम अच्छे से हुआ नहीं है बट आपको थियरी करनी है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो गेट थियरी. सी, दीज आर द फ्लैश कार्ड्स. One question, the answer is beneath the question. One question, the answer is beneath the question. You can get all these 3 books at these are e-books by the way, okay, and you can get all these 3 e-books at just 150 rupees, and out of which, let me tell you that I will be using this particular revision Rajdhani for my revision. Okay, so if you are interested in purchasing this book, most welcome. The prices are very I think affordable at this moment. Benefit आप देखो, benefit बहुत ज़्यादा मिल रहा है as compared to the cost, है ना. एंड रिविजन बैच तो वॉश फ्री है ही आपके लिए, तो उसके लिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना. एंड आई गेस दिस एंड्स अप अवर टुडेज क्विक सेशन, दिस एंड्स अप अवर टुडेज शॉर्ट सेशन. दिस वाज ऑल अबाउट इट, एंड मिलते हैं हम लोग कल हमारे पहले लेक्चर के साथ, leverage analysis. Trust me, it is going to be one of the best sessions that you have ever seen till date. Okay, so I'll see you guys tomorrow. Till then, I wish you all the very best. And रुको, जाने से पहले सब्सक्राइब किया चैनल को? सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दोस्तों के साथ. तुम लोग भाग रहे हो, मेरे को दिख रहा है. Go subscribe the channel and stay tuned, because this is going to help you really well in the exams as well.